Good morning, dear student. Today we will learn rounding of the numbers to nearest lakhs, 10 lakhs and crores. Students, in previous video we have already learned rounding of the numbers to nearest tens, hundreds and thousands. So let us start. The population of a city in a year was 12,57,821. Round off the given population to the nearest lakhs and 10 lakhs. So student, what is given in this question? Here we have given the population of a city which is 12,57,821 and we have to estimate this population nearest lakhs and then 10 lakhs. So firstly we write the places on the top: ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs. So student, here firstly we have to round nearest lakhs और lakhs place की digit क्या है? वो 2 है एंड अकॉर्डिंग टू रूल अगर हमें lakhs प्लेस की डिजिट को राउंड करना है तो हम 10,000 प्लेस की डिजिट को चेक करेंगे एंड 10,000 प्लेस की डिजिट 5 है। अकॉर्डिंग टू रूल जिस नंबर को राउंड करना है उसकी नेक्स्ट डिजिट अगर 5 और मोर देन 5 लाइक 6, 7, 8 और 9 हो तो जिस नंबर को राउंड करते हैं उसमें 1 प्लस हो जाता है। सो हियर वी गेट 3 एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन प्रीवियस वीडियो कि जिस नंबर को राउंड करते हैं उसकी राइट साइड की डिजिट 0 हो जाती है। सो हियर वी राइट 3 lakhs और उसकी राइट साइड की सारी डिजिट 0 हो जाएगी और लेफ्ट साइड की डिजिट जो कि 1 है वो एज इट इज ही रहेगी। Thus we can say rounded off population to nearest lakhs is equal to 13 lakhs. Now let us round off the same population to nearest 10 lakhs और यहाँ पर 10 lakhs प्लेस की डिजिट 1 है। अब हमें 1 को राउंड करना है तो हम उसकी नेक्स्ट राइट डिजिट चेक करेंगे जो कि 2 है और 2 5 से कम है तो यहाँ पे 1 1 ही रहेगा और उसके बाद की सारी डिजिट 0 हो जाएगी। Thus rounded off population to nearest 10 lakhs is equal to 10 lakhs. Now let us take one more example. Round off 1 crore 38 lakhs 92,514 and 74 crore 83 lakhs 43,291 to nearest crores. So student, firstly we round 1 crore 38 lakhs 92,514 to nearest crore. So first we write the places on the top. So student, here the crore place digit is 1 and as you know अगर हमें crore place की डिजिट को राउंड ऑफ करना है तो हम 10 lakh place की डिजिट को चेक करेंगे एंड here 10 lakhs place digit is 3 which is less than 5. तो इसका मतलब जिस नंबर को राउंड कर रहे हैं वह एज इट इज ही रहेगा और उसके राइट साइड की सारी डिजिट 0 हो जाएगी। सो 1 crore 38 lakhs 92,514 rounded off to nearest crores is equal to 1 crore. Now let us round 74 crore 83 lakhs 43,291 to nearest crores. So student, first we find out the digit which is at crore place and here crore place digit is 4 and according to rule if we have to round crore place so we check the digit which is at 10 lakhs place और यहाँ पर 10 lakh place की डिजिट 8 है which is more than 5 तो इसका मतलब 4 में 1 प्लस हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 और जिस नंबर को राउंड करते हैं उसकी लेफ्ट साइड की डिजिट जो कि 7 है वो एज इट इज ही रहेगी और उसके राइट साइड की सारी डिजिट 0 हो जाती है। So here we have 7 digits. So in front of 5 we put 7 zeros. So 74 crores 83 lakhs 43,291 rounded off to nearest crores is equal to 75 crores. So student, this is how you can round any given number to nearest lakhs, 10 lakhs, crores and so on. I hope your concept is clear. Now it's practice time. Student, here you have to round numbers to nearest lakhs, 10 lakhs and crores. So pause your video and solve it and we'll meet in next video. Till then, thank you. Bye-bye. Take care.